Hello everyone, welcome back. Today we are going to start our fifth chapter of class 10th, that is arithmetic progression. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच सके जो सच में फ़िज़िकली या कोचिंग नहीं जा सकते या ट्यूशन फ़ी अभी पे नहीं कर सकते, उन तक ये चैनल पहुंचे सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इन अ सीक्वेंस, वो भी सीक्वेंस से पूरा सिलेबस कवर कर सकें, उनकी क्वेरीज़ को हम क्लियर कर सकें एंड share it in your groups, to your friends, to your classmates as much as possible. So after this request, let's begin with our fifth chapter. This is chapter number 5, arithmetic progression. Or you can say AP. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स. ये बहुत ईजी चैप्टर है और मुझे बहुत पसंद था क्योंकि दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ हार्डली 2 or 3 फार्मूलाज एंड विद दोज 3 फार्मूलाज यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप. So I hope everybody will enjoy it and I hope after learning this chapter you are not going to leave the question from this chapter in your board exam. So let's begin. What is arithmetic progression? What do you mean by progression? Progression का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना. तो प्रोग्रेस करना मतलब कि एक टर्म में कुछ और ऐड करना तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाए, सेकेंड टर्म में कुछ और ऐड करना तो हमें थर्ड टर्म मिल जाए. ऐड करना या कुछ भी उसको बढ़ाना घटाना कुछ भी हो. सो एनी इवेंट हैपन टू द फर्स्ट टर्म देन यू आर गेटिंग द सेकेंड टर्म एंड द सेम थिंग हैपन टू द सेकेंड टर्म देन यू आर गेटिंग द थर्ड टर्म. दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. के बाय यूजिंग द प्रीवियस टर्म you are getting the current term and by using the current term you are going to get your next term. So this is called a progression. So in this case generally it is denoted by A1, A2, A3 and so on. This may be a finite or may not be finite. It may be up to infinity or it may be some finite length. So in this case we have arithmetic. Now what is the meaning of arithmetic progression? That means you are getting the second term after adding something to the first term. Addition. After adding something to the first term and you are getting third term after getting the same thing to the second term. Okay, and in this way this progression continues. For example, suppose you have 2, 5, 8, 11 and so on. So what you are getting in 2 to get 5 you are adding 3 and what you are getting in 5 to get 8 that is again 3. What you are adding in 8? 3 to get 11. So in this case you are adding the same number to the previous term to get the next number. So this is called an AP. This is called an arithmetic progression. If the difference is not same, that is not an arithmetic progression. That means if you are getting 2, 5, 6 and then 10, that means here the difference is 3, here the difference is 1, here the difference is 4. This may be a progression, may be some a different kind of progression, but this cannot be an AP. This is not an AP. So are you getting my point? The difference between any two consecutive term should be same. Difference between any two consecutive terms should be same. That is mathematically आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे? A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. It should be equal to A4 minus A3 and so on. सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड
AP, and we can denote this difference by D, and we call it a common difference. Common difference. For example, in this case the common difference was 3. D was 3. So further we have notations for AP. Notation for AP. Suppose the AP is A1, A2, A3 and so on. Then if you are denoting the first term by A and the common difference is D, then what will be your second term? A plus D, definitely. What would be your third term? Adding the same D to the second term. So it will become A plus 2D. And what would be your fourth term? A plus 3D, because again you have to add D to the second term. This is your fourth term. A1, A2, A3, this is A4 and so on. Clear? So in this case, if it continues up to AN, then what would be the nth term? For second term you are getting 1D, for third term you are getting 2D, for fourth term A4, for fourth term you are getting 3D. So for nth term you will be getting A plus n minus 1 D. So this is your nth term formula. This is your AN. This is nth term formula. This is called an AP. Now in the first exercise you have only to check whether it is an AP, what is the first term, what is the common difference. These three basic type of questions are there in exercise 5.1. Exercise 5.1. Let's begin with the first question. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कि नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स गिवन है, उनको मैथमेटिकली जज करना है और ये बताना है वेदर दे फॉर्म एन AP और नॉट. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. That means in this problem, for first kilometer you have to pay rupees 15. You have to pay rupees 15, and for next each kilometer you have to pay rupees 8. यानी कि एक बार अगर आप ऑटो में चढ़ गए या टैक्सी में चढ़ गए तो 15 रुपीज़ तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए देने हैं. उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो सेकंड किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ हो जाएंगे. अगर उसके बाद आप जाओगे 3 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो ये 15 + 8 हो जाएगा. ये फर्स्ट किलोमीटर का, ये सेकंड किलोमीटर का, ये थर्ड किलोमीटर का एंड सो ऑन. सो दिस इज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, दिस इज़ फॉर सेकंड किलोमीटर एंड दिस इज़ फॉर थर्ड किलोमीटर. अगर हम इसको रीराइट करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 + 8 एंड 15 + 2 × 8. So what it forms? It forms this is A, this is A plus D. D is the common difference. हर टर्म में 8 8 8 ऐड होगा. हर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं. सो this forms an AP 2D. So the common difference is 8 and the first term is 15. Therefore it forms an AP. With A is equal to 15 and D is equal to 8. Yes, it's an AP. So let's move to the second question. Write first 4 terms of the AP when you are given with A and D. Question number 2. You have given A is equal to 10, A is equal to 10 and D is equal to again 10.
you have to write the AP. So what is AP? A1, A2, A3, A4. A1 is A, that is 10. A2 is A plus D. You have to add the difference. This is 10 plus 10. This is 20. Again, A3 is A plus 2D, or second term plus D, A2 plus D. So this is 10 plus 2 into 10, यानी कि 20, that is 30. What is A plus 3D? This is 10 plus 3 into 10. This is 40. So your AP becomes 10, 20, 30, 40 and so on. You can check your answer. First term is D and the difference between every term is 10. That is your D, that is common difference. So this is your AP. Let's move to some another question. I am taking part 4th. This is A is equal to minus 1 and D is equal to 1 by 2. So what should be the first term of AP? A. What should be the second term? A plus D. What should be the third term? A plus 2D. And what should be the fourth term of the AP? यानी कि A plus 3D. प्रीवियस टर्म में आपको डी ऐड करते हुए जाएंगे तो यही सीक्वेंस हमें मिलेगी हर बार. सो दिस इज़ अ जनरल नोटेशन. सो ए इज़ -1 प्लस 1 बाई 2. दिस कम्स आउट टू बी -1 बाई 2. आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -1 बाई 2 आएगा. अगेन दिस इज़ -1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 - 1 0. And this comes out to be -1 plus 3 1 by 2. -1 plus 3 by 2. This will comes out to be 1 by 2. Okay. So your sequence become or your AP becomes -1, -1 by 2, 0, 1 by 2 and so on. Again you can check your answer. First term is -1. Correct. Now the difference -1 by 2 plus 1. इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, सेम आ रहा है. इन दोनों का चेक करो, सेम आ रहा है. इन दोनों का चेक करो, सेम आ रहा है. एंड इट शुड बी इक्वल टू डी. सो आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, पार्ट 1. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. वेरी इजी. आपको एपी गिवन है, आपको उसमें से फर्स्ट टर्म निकालिए और डी निकालना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम लेते हैं 3 1 -1 -3. सो डेफिनेटली द फर्स्ट टर्म इज 3. ये पार्ट हो गया आपका. इट इज़ गिवन, इट इज़ एन एपी. क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज. फॉलोइंग एपीज के लिए आप लिखो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म. तो हमें चेक भी नहीं करना कि ये एपी है कि नहीं. डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. टेक एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उनका डिफरेंस आपको क्या देगा, डी. सो 1 - 3 करोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, -2. ठीक है. ये आपने क्या किया, A2 माइनस A1. आई कैन राइट आउट A2 माइनस A1. अगर आप A3 माइनस A2 करते हो, A3 माइनस A2 करते हो तो आपको क्या मिलता, -1 -1. दिस अगेन कम्स आउट टू बी -2. एक और ट्राई कर लो, A4 माइनस A3, -3 माइनस प्लस 1. दिस कम्स आउट टू बी -2. देयरफॉर D इज इक्वल टू -2. क्लियर. I can take one more example of this. Let's take third part. 1 by 3, 5 by 3, 9 by 3 and 13 by 3. So on. Again A is equal to 1 by 3. A is your first term. What is the common difference, D? You can take any 2. A2 minus A1. This is 5 by 3 minus 1 by 3. This comes out to be 3. 5 minus 1. This is 4 by 3. And if you take 9 by 3 minus 5 by 3, you can see again you will be having 4 by 3. So this is your D. Because it is given, it is an AP.
In this case, you need not to find again and again d from different values. If it is not given, if your question is like the question number 4 we have, which of the followings are AP? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा इनमें से कौन से AP हैं. If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. अगर AP है तो आप उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म्स और आपको लिखनी है उसकी. क्लियर? तो इस केस में हमको गिवन टर्म्स सबका डिफरेंस हमें चेक करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, it is a given for the following AP, then you need not to find difference from all the given terms. You can take any 2 consecutive terms, and if it has been asked in the question which of the following are APs, then you have to find the difference from all the given terms. For example, first part इसका लें अगर 2, 4, 8, 16. क्लियर? सबसे पहले हम चेक करेंगे वेदर दिस इज़ एन AP और नॉट. पहले आप माइंड में ही चेक कर लो. 4 - 2 2, 8 - 4 4 हो गया, तो नो, इट कैन नॉट बी एन AP. अब हमको सिर्फ उसको लिखना है. A2 - A1 इज इक्वल टू 4 - 2, दैट इज 2. A3 - A2, दैट मीन्स 8 - 4, दिस इज 4. So these are not equal. A2 - A1 is not equal to A3 - A2. जहाँ पे भी equal नहीं आता है, stop it there, and therefore this is not an AP. Not an AP. This is not an AP. Now let's move to the another example. Second, here you are taking 2, 5/2, 3, 7/2. Again you have 4 terms. So first of all you can check A2 - A1. This is 5/2 minus 2. So this comes out to be 2 LCM. 5 - 4, this is 1/2. Again you check A3 - A2. 3 - 5/2, this comes out to be 2. 6 - 5, this is 1/2. Correct. Now check A4 - A3. This comes out to be 7/2 minus 3, this is 2. 7 - 6, this is again 1/2. So in all the terms you are getting the common difference 1/2. Therefore D is equal to 1/2 and A is equal to 2. Yes, it's an AP. It's an AP. आगे क्वेश्चन में है राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि 7/2 के बाद आपको 3 मोर टर्म्स और निकालनी है. सो दिस इज योर A1, A2, A3, A4 are given. You have to find A5, A6 and A7. What should be A5? A5 should be A plus 4D. And what should be A6? A plus 5D. Or what should be A7? A plus 6D. Or you can write them as A4 plus D or A5 plus D or A6 plus D. बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. या तो आप पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो A plus 4D for A5. अब A5 के लिए हमें निकालना है A4 plus D. What is your A4? Your A4 is 7/2. So this is 7/2 plus 1/2. This is 8/2. That means this is 4. Now what is your A6? A5 plus D. A5 comes out to be 4. 4 plus 1/2. This will be your 9/2. Now A7 will be A6 plus D. So 9/2 plus 1/2, that is 10/2, that is 5. So your next 4 terms are 4, 9/2 and 5. So this complete your exercise 5.1. This is very easy.